Rahim. Assalamu alaikum. Today we will solve question number 5 of exercise 6.2. The marks obtained by students of class first year in mathematics are given below. Compute arithmetic mean by direct and indirect methods. So what you have to compute, which is the arithmetic mean that we have to calculate. Now, uh, two columns are given to us. Let me interpret the data, how you are going to read out the data that two students got marks in from the range 0 to 9. Maybe one got 2 marks, or maybe one got 9 marks, or maybe one got 0 marks, right? Second readout, 10 students got marks from the range 10 to 19. So first column is of classes, or you can say the range, or you can say the class limits is given to us, and second column is the frequency. Now how many columns you are going to make and what you are supposed to write down in this column totally depends upon the formula that we are going to use. Now you see, now let me write down the formula and then we will fill out these columns. Now how you are going to write down the formula, which formula you are going to use. So see, that depends upon the first column, which means the classes. आप देखें यहाँ पे ग्रुप्स की फॉर्म में डाटा गिवन है. सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप डाटा का आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे. सो बाय डायरेक्ट मेथड हम क्या करते हैं, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लिखते हैं. What is the formula? X bar, that is equal to sigma fx divided by sigma f. Now f, small f stands for frequency. See, second column is already given to us. X is missing over here. There is no x given to us. So x stands for midpoint. So in the third column, we are going to write down the midpoint. And midpoint stands, x stands for midpoint, right? Now how you are going to find out this column, what you are going to write here. क्या find करना है, कैसे find करना है. Lower class limit plus upper class limit divided by 2. This means 0 plus 9 divided by 2, which is equal to 4.5. Similarly, 10 plus 19, you got 29, and answer is divided by 2 becomes 14.5. Similarly, you have to fill out the whole column. Right? How you are going to find out the midpoint? Midpoint किसका find करना है, classes का, or you can say the class limits का find करना है आपने, right? And how you are going to find it? The lower class limit plus upper class limit divided by 2. This is how you are going to find out the midpoint. Now see, fx is here. So fx column, we are going to make fx column. fx stands for f, मैं frequency इधर लिख देती हूँ. Now fx stands for, what you have to write, you have to multiply the column of f by x. ठीक है? So 2 into 4.5, that becomes 9. Then 14.5 multiplied by 10 becomes 145. Similarly, 122.5, 310.5, 267, 381.5, and 641.5. So sorry, 64.5. Right? So हमारे पास क्या है, 64.5 multiplied by 1 is 64.5. Now you see, हमारे पास ये जो फॉर्मूले की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं. So sigma fx, sigma means the sum of the values of fx. So यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा रो बनाई है, इसकी इसीलिए बनाई है कि यहीं पे हम इसका sigma fx लेने. sigma fx means you have to add up all the values of fx of this column. That comes out to be 1300. So here we'll write down the 1300. Sigma f means किसको ऐड करना है, आपने सम करना है ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ f. f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी. तो सिग्मा f आप इन सबको वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे. 2 + 10 + 5 + 9 + 6 + 7 + 1, दैट कम्स आउट टू बी 40. तो आपने यहाँ पे 40 लिख लेना है. इनको डिवाइड करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 32.5. नाउ वी गॉट दी अर्थमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मैथड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर बाय द इनडायरेक्ट मैथड. इनडायरेक्ट मैथड में आपने दो फॉर्मूलाज देखे हैं, शॉर्टकट and the other is the coding. So one by one we will move towards this shortcut method. Again we will write down the formula for the group data for this shortcut method. Right? Now here you see a अब हमने क्या select करना है, fd. f is already there, sigma f is already there, but d is missing. So what we are going to write, we are going to write down the formula for d. अब d यहाँ पे क्या है, d is equal to, let's say if I write over here, d is equal to x minus a. You see x is there, the midpoint column.
A is missing. A is actually the provisional value, any assumed value from this column. दैट इज़ द थर्ड कॉलम जो मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया है, बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सी भी अज्यूम वैल्यू वहाँ पे ले सकते हैं जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेयर आई हैव टेकन दैट लेट्स से 34.5, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ ए। सो हम क्या करते हैं, अब डी कॉलम कैसे बनेगा आपके पास, डी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ ए, राइट। अब ये डी हम कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यूज़ में से ये जो a की अज्यूम वैल्यू है ये आपने माइनस करते जाना है। सो हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या कॉलम है, फर्स्ट में वैल्यू क्या 4.5 माइनस ए हमने क्या सोचा हुआ है 34.5, इसको सॉल्व करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी -30। सिमिलरली 14.5 माइनस 34.5 दैट कम्स आउट टू बी 20। Similarly, we'll subtract the next values. So ये आपके पास क्या होगी, डी डी की वैल्यू आ गई। नाउ अब आप देखें फॉर्मूले में हमारे पास ए तो आ गया प्लस सिग्मा एफ डी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू मेक द नेक्स्ट कॉलम विच इज़ ऑफ एफ डी। एफ डी मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ एफ बाय द वैल्यूज ऑफ डी। एफ इज़ ऑलरेडी देयर फ्रीक्वेंसी, डी अभी हमने बनाया, सो हमने क्या करना है, टू को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ डी मीन्स you have to multiply 2 by -30, that comes out to be -60. Similarly 10 into -20 that becomes -200. Similarly 5 into -10 becomes -50. 9 into 0 sorry yes 9 into 0 is 0, then 10 into 6 is 60, then 7 into 20 is 140, then 30 into 1 is 30. Now हमारे पास फॉर्मूले की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। लेट्स insert the values. Instead of a we have assumed already value, that is 34.5. now sigma fd means you have to add up all the values of fd. अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ डी इस वाली रो में बना लेते हैं ताकि हमारे पास इधर ही वैल्यूज़ हमारी ऐड अप हो जाए। तमाम वैल्यू जो एफ डी वाले कॉलम है वो आपने ऐड कर लेनी है। सो इंस्टेड ऑफ सिग्मा एफ डी वी विल राइट -80 डिवाइड बाई सिग्मा एफ और डी पाइन क्या, इट कम्स 40। इसको सॉल्व कर लें, 0 0 से कैंसिल, 4 4 2 times 8 34.5 plus into minus is -2 that becomes 32.5. So we have calculated arithmetic being by indirect method में हमारे पास we have applied shortcut method. Now let's move to the coding method. We'll write the formula first, x bar that is equal to a plus sigma fu divided by sigma f multiplied by h, ठीक है। अब हमारे पास a ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट वाज 34.5 द assumed वैल्यू ऑफ x, f ऑलरेडी देयर है बट u इज़ नॉट हेयर। नाउ विल राइट डाउन द फार्मूला फॉर u, लेट मी राइट इट ओवर हेयर। अगर मैं यहाँ पे u का फार्मूला लिख देती हूँ, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर u, u इज़ इक्वल टू x minus a over h, right? So u is equal to x minus a over h, आपके पास फार्मूला आ गया। Now how you are going to find x, right? हमारे पास क्या x माइनस ए तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया विच इज़ d। अब एज क्या है यहाँ पे, एज इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। आप 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करें इंक्लूडिंग 0 तो आपके पास कितने डिजिट्स बनते हैं, 10। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इस लोअर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को चेक करें यहाँ पे तो 0 और यहाँ से 10 काउंट करें तो ये आपके पास 10 आपके पास डिस्टेंस बन जाता है। सो इट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हमारे पास u फाइंड करते हैं, u इज़ इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच, ठीक है। ये आ गया आपके पास। हमारे पास क्या है, x माइनस ए को हमने किससे डिवाइड करना है, एच से, एंड एच हियर इज़ 10। सो लेट्स डिवाइड इट, -30 divided by 10 comes -3, then -2, then -1, then 0, then 1, then 2, and then 3, right? Now what you are supposed to do next, since we have to find a is already there, sigma f is already there, h is already there, fu is not written, हमने तो अब fu का कॉलम बनाते हैं। So fu will be, this means you have to multiply the values of f by the values of u. So 2 into -3 becomes -6, 10 into -2 becomes -20, -5, 0, then 6 into 1 is 6, then 7 into 7 2 times 14, then 1 into 3 is 3.
Then you have to add up all the values, sigma fu, that comes out to be minus 8, right? Let's insert the values. X bar is equal to 34.5 plus sigma fu की जगह हम क्या डालने हैं, -8 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई एज विच इज़ 10. 0 0 से कैंसिल, 4 1 times 4 4 2 times 8, plus into minus is -2, so you got minus up करेंगे तो it becomes 32.5. So you see we got the arithmetic mean हमने find out किया है by all the methods, are by direct method and indirect method. I hope the steps are clear to you. Thank you so very much.